गुड मॉर्निंग गाइस अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल डू? तो लास्ट वीक वी कंप्लीट series for the interview preparation sessions for the subject of chemical reaction engineering. Here we discuss some important questions, important concepts related to CRE, which can be helpful for your interviews in bar and other PSUs. Now, this week we have started our discussion. We are starting our discussion for chemical engineering thermodynamics. In this series, we will discuss some of the important thermodynamic questions which you will find useful for your preparation, for your interviews. And obviously, we will also cover some of the concepts related to that particular question, that topic. Okay. तो उससे पहले हम स्टार्ट करें तो आई जस्ट वांट टू नो हाउ आर यू ऑल? कैसा चल रहा है सब? हाउज योर प्रिपरेशंस आर गोइंग? लाइक वी नो ओनली 1 or 2 weeks आर रिमेनिंग फॉर योर इंटरव्यूज. आई होप मोस्ट ऑफ योर प्रिपरेशंस हैव बीन completed. I believe that. So how's everything? No, little nervous. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है. That is natural. तो if you are feeling little nervous तो hence proved you are human being. अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं की बात नहीं है. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. So guys, here what we will do now, this week we have 3 sessions. One is today, then 29, and then 30. Episode 4, episode 5, and episode 6. So there we will discuss some of the important questions from thermodynamics, and I have tried to include the questions from your daily life perspective, daily life point of view, and some advanced questions like where we are having the two or three concepts mixing together. ठीक है? You can say mixed concepts and couple of rare, or you can say insane level questions we will discuss. So overall, we have planned to cover up at least 15 questions, which will help you to revise almost entire thermodynamics, including some of the basics from mass transfer, CRE, and fluid mechanics as well. Okay, so before we start our discussion, I would like to tell you something about myself. Since most of you already know, my name is Ankush Gupta, a curious educator. I'm helping the students for GATE Chemical Engineering exam since 2013. And here on Unacademy, I discuss these subjects: thermodynamics, chemical reaction engineering, fluid mechanics, process calculation, general aptitude, and I will also help you in process equipment design. Okay, so this is something about me. I have studied my masters at IIT Delhi, and now let's start our discussion on the series of interview preparation sessions. Akka SIPs. This is our technically sixth session, technically fifth session, but episode 4. Yeah, fifth session it is. And episode 4 in the Ace Your Interviews.
The first question here I have is explain the process of melting of ice from thermodynamic point of view. And you have to mention how we can relate that with entropy. So take couple of minutes, think, and then we will discuss. So now let's start our discussion on this. So let me give you some basic idea how you should approach this answer, how you can answer such things. So if they ask you what is the process of melting, so you know melting of ice. Melting is basically the transformation. Melting is referred for the process of transformation of solids into liquids. And if I talk about the melting of ice, the melting of ice can take place at a melting point which can be defined as 1 atmospheric pressure and 0 degree Celsius. So here the ice will convert into water. So during this process of melting, all of us know that the temperature will gonna remain same, or you can say constant. So basically we can say that melting of ice is one isothermal and isobaric process. Cool. So here when we talk about the melting of ice, so you should know that melting of anything or melting of ice basically. So here if we have suppose 1 kg ice, or let's say m kg ice to be precise, that would be better. If we say we have m kg ice at 0 degree Celsius and 1 atm. So we have ice molecules, that is a solid state. Now it will convert into water, that is the liquid state, at the same temperature and pressure. So the amount of heat required for this transformation is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion. So here, if I have to explain this from first law of thermodynamics,
from first law of thermodynamics. So here you know that first law of thermodynamics can be can be described as Q12 minus W12 is equal to delta U. That is nothing but U2 minus U1. So delta U is refers for change in internal energy. W12 we can say is the work done by the system. Q12 can be referred as heat transferred or heat supplied to the system. Here this mkg ice will be my system. Okay. So here you guys can understand easily. Work done will be zero since there is no moving part, nothing. Heat supplied to the system will be equivalent to m into delta HF, where m is the mass of ice and delta HF is the latent heat of fusion for water. And I hope you know that latent heat of fusion for water typically is approximately 334 kilojoule per kg. So anyways, from this way, you can calculate the amount of heat supplied. Now you will say we are not supplying any heat, then doesn't matter. Ice is there at 0 degrees Celsius. Surrounding is at generally 25 degrees Celsius, 30 degrees Celsius. So surrounding temperature is high. So obviously automatic heat supply will be there from surrounding to the ice. How much? Equivalent to the latent amount of heat, latent heat of fusion required. Or you can say approximate this if we have 1 kg ice. Okay? Because this is a typical value of latent heat of fusion for water at 1 atm and 0 degrees Celsius. Now we know the amount of heat required. So you can see from first law of thermodynamics, where you know that first law of thermodynamics is all about the law of conservation of energy. It helps us to figure out that a change in internal energy of the system will be equal to the amount of heat absorbed or amount of heat being supplied from surrounding to the system. So that's how you can find out. This is the thermodynamic explanation, thermodynamic analysis of the process. Melting of ice. First law of thermodynamics we have applied. Internal energy concept we have applied. We have seen the heat amount of heat required. We have seen the work done here will be zero. This is your thermodynamic consideration basically. And further, if you want to explain, so you can talk about the isothermal and isobaric processes. I hope it is clear to all of you. Yeah, now it's fine. Noted? Now let's talk about the entropy consideration. Okay, if you see the question.
what is the role of entropy, how we can relate entropy here. Okay, so for entropy, we have to talk about the second law of thermodynamics. And I hope you guys know second law of thermodynamics states that total entropy of an isolated system, total entropy of an isolated system will always increase for spontaneous processes. I hope you guys know second law of thermodynamics we can define in many ways. ठीक है? That is one of the fundamental law of the universe. ठीक है? तो इसे आप बहुत तरह से रिलेट कर सकते हो, अगर एंट्रोपी की टर्म्स में डिफाइन करना है तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. And if I talk about the spontaneous process, so you know that spontaneous processes are those which are naturally occurring and irreversible. ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो you should know that what is happening, ice is melting into water. तो what is entropy पहले वो समझते हैं. तो entropy, you know, in one line if you have to answer you can mention it is a thermodynamic property. It is a thermodynamic property that measures the degree of disorderness, or you can say randomness, in the system. मतलब अगर इस आसान भाषा में बात करें तो हम बोलते हैं ना इन डेली लाइफ की किसी का हम लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों का मन चंचल होता है. ठीक है? तो चंचल मन से हमारा मतलब क्या है? दे आर नॉट एबल टू फोकस देयर थॉट्स. वो हमेशा कहीं ना कहीं इधर उधर सोचते रहते हैं. उनकी एनर्जी हमेशा स्प्रेड आउट रहती है. दे आर नॉट एबल टू फोकस देयर एनर्जी ऑन वन पर्टिकुलर थिंग. ठीक है? देयर थॉट्स ऑन वन पर्टिकुलर थिंग. दिस इज द मीनिंग. तो उस केस में जो लोग होते हैं जिनका मन चंचल होता है या जो बच्चे होते हैं उनका मन चंचल होता है तो वो आप बोल सकते हो उनके अंदर रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, क्योंकि वो बिखरे हुए हैं, उनके थॉट्स, उनकी एनर्जी स्प्रेड है, तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा है. बट अगर मैं किसी पर्सन की बात करूं, फॉर एग्जांपल वन स्पिरिचुअल पर्सन, और यू कैन से army person like a people who live a disciplined life, they don't have that tendency. They know how to channelize their energy in one direction. They know how to control their thoughts. उन केसेस में उनकी जो एनर्जी है, सॉरी एंट्रोपी है, वो कम होती है. ठीक है? तो आई होप इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो एंट्रोपी को. आइस के केस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. They are not able to move here and there so frequently. So we can say ice, basically the solid state. So here the molecules are quite in ordered manner. Molecules are in quite ordered manner. ठीक है? तो इसका मतलब इनकी जो एंट्रोपी है वो लो होगी. बट वाटर की बात करें, लिक्विड स्टेट, यू नो इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव सम freedom to move here and there, so randomness will be there. So here molecules have freedom to move here and there. So that's why in this case, the entropy will be quite high, relatively high, as compared to ice. तो आप समझ सकते हो जब हम आइस से वाटर की तरफ जा रहे हैं, obviously entropy change means final minus initial. So we can write it as entropy of water minus entropy of ice. So it has to be a high value, a large value. It means entropy change is increasing. है ना? But how mathematically also you can see, you know that for phase change operations,
For phase change processes, entropy change can be defined as the amount of heat required or the amount of latent heat involved during the phase change divided by the temperature of the process. So here you know that the amount of heat absorbed during the phase change process from ice to water was m into delta HF, latent heat of fusion, upon T. So that's how you can find out. If you have to calculate, you can do this calculation as well. Let the mass of the water is 1 kg or mass of ice. Latent heat of fusion is approx 334 kilojoule per kg at a 180 m and 0 degree Celsius. We know that. And temperature is 0 degree Celsius, or you can say 273.15 Kelvin, or you can write 273 Kelvin itself. Doesn't matter. So here you can see this value will be 334 upon 273. So almost 1.1 something, whatever. You can do check. ठीक है? Almost 1.2, correct. 1.22 kilojoule per Kelvin. So this is the total entropy change for the ice to water process, melting process. That's how you can find out the entropy. So I hope it is clear. अब यहाँ पे अगर आपको now here if you want to relate entropy मतलब in a physical significance if you have to mention or if you have to relate the entropy physically there ये तो हमारा mathematical stuff हो गया. Physically if you have to relate, so you can define that thing, the physical interpretation of entropy in melting of ice in steps. ठीक है, like three steps basically. The first step will be, if you see melting of ice, what are if you have to define this process in a multiple steps, how will you write? So ice is there, है ना? The first step is absorption of heat, then phase change, and last the rise in entropy. ठीक है? So first step you can define as the heat absorption, the absorption of heat step. So what happens? We have ice. The energy, the heat absorbed by the ice from surrounding will be utilized to break the bonds in water molecules. You can think like this. Water molecules में जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं in ice, उन्हें break करने में consume होती है. That's why the ice structure will start to melt down, break. Solid will break down and what liquid form will appear. ठीक है? Then phase transition will there. So ice has the ordered structure. All molecules are quietly placed in a disciplined manner, in an orderly manner. So entropy will be low. And when phase transition will occur, so all these molecules will start to move here and there. Liquid state means what? Molecules can move here and there easily. Obviously, now the molecules will not stay in the orderly manner. So their randomness, their entropy will increase, will be on a higher side. Okay. And then the third point will be entropy change. If you compare entropy of water to entropy of ice, so you can see it will have the rise in entropy. That's how you can define these things. ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे तो आप फर्दर ये भी बोल सकते हो. Melting of ice is one endothermic process where heat is absorbed by the system and thus the entropy increases. So here you can see in melting of ice, we have introduced first law of thermodynamics as well as second law of thermodynamics and entropy. Okay, so that's how you can relate your answers. So I hope this thing is clear to all of you.
ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन इज दिस, वेरी इजी वन। Why does water boil at lower temperature on mountain tops and higher temperature at a higher temperature in pressure cooker? Discuss the effect of pressure on boiling and freezing points. तो ये एक हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मास ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू से, हीट ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह से डिफाइन और या एक्सप्लेन कर सकते हैं। So take couple of minutes, think, and then we will discuss. That's better. So, shall we discuss? Shall we start our discussion now? So, guys, I hope you know about the boiling point temperature, boiling point of the water or anything. Okay. So, what is the meaning of boiling point? पहले तो उसकी बात कर लेते हैं. Boiling point temperature. What is that thing? So, boiling point temperature, or you can say the saturation temperature. So, this is the temperature of water, or you can say liquid, at which the vapor pressure of the liquid will be equal to the will becomes
equal to the surrounding pressure. ठीक है? मतलब अगर मेरे पास कोई वाटर है, फॉर एग्जांपल हियर आई हैव दिस वाटर, temperature will be same as the room temperature, 30 degrees Celsius. Now, if they ask you how boiling will occur, so don't say boiling will occur when temperature will be equal to boiling point temperature. No, in liquids, boiling always occur when the vapor pressure of the liquids will be equal to the surrounding pressure, the atmospheric pressure, or the system pressure in case of closed vessels. ठीक है, तो in simple terms you can say the surrounding pressure or system pressure you can say. Okay, that's why when we talk about the distillation, वहाँ पे भी हम वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं volatile and non volatile components. We don't talk about the boiling point temperatures. आपने पढ़ा होगा ना, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है अल्फा का, रिलेटिव वॉलेटिलिटी, that is defined based on vapor pressure. So vapor pressure is the thermodynamic parameter. So we should use the vapor pressure term in our answer to explain this. When the vapor pressure of the liquid will be equal to its surrounding pressure, then the boiling will occur. Okay. So here in this case, you know that from Clausius-Clapeyron equation, that is dP over dt is equal to this. dP upon dt is equal to lambda V upon T delta V, where you know that dP change in pressure, change in temperature, or you can say change in pressure with respect to temperature. Lambda V is the latent heat of vaporization of the liquid. T is the given temperature. Delta V is the change in a specific volume of the system. So here you can see when we talk about the mountain top. So at mountain top, all of us know that the atmospheric pressure at mountains is quite less than the atmospheric pressure at sea level. ठीक है? The atmospheric pressure at the mountain tops is less than the atmospheric pressure at sea level. तो उससे क्या बेनिफिट है? उससे क्या वो पता चला? उससे हमें ये पता चला कि माउंटेन पर वी नीड लेस एनर्जी, वी नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू सी लेवल. ठीक है, तो दैट्स व्हाई एट माउंटेन टॉप्स द वाटर कैन बॉयल एट लोअर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर्स देन द सी लेवल. ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर माउंटेन पर कम हो जाएगा बिकॉज द सिस्टम प्रेशर, द सराउंडिंग प्रेशर is less than the surrounding pressure as at sea level. तो इसलिए माउंटेन टॉप पे हमें कम टेम्परेचर से कम एनर्जी से भी काम हो जाता है. ठीक है, वी हैव टू सप्लाई द लेस एनर्जी. ठीक है, बट अगर हम बात करें प्रेशर कुकर, so at pressure cooker you can understand pressure inside the system, pressure inside the cooker will be greater than that of at the sea level. ठीक है, why? Because inside the pressure cooker vapors are getting formed, steams is getting formed, and due to the steam the pressure will rise. So inside the pressure cooker total pressure will be high, so obviously the boiling point temperature will be high.
as compared to that of at sea level. So boiling will of water will occur at high pressure, sorry, high temperature than that of at sea level, normal boiling point temperature. ठीक है, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात हो गई माउंटेन के केस में और प्रेशर कुकर्स के केस में, कैसे वो चीज़ों को अफेक्ट करते हैं और वाई माउंटेन टॉप्स पे हमारा बॉइलिंग हाई टेम लो टेम्परेचर पे और प्रेशर कुकर में हाई टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, दिस इज द रीजन, क्योंकि माउंटेन्स पर जो हमारा प्रेशर है वो कम है, तो हमें कम टेम्परेचर लगेगा एट वेरी लो टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर, क्योंकि ये कम है तो बॉइलिंग जल्दी हो जाएगा। बट इनसाइड द प्रेशर कुकर जो टोटल प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा वेपर प्रेशर को उसके इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे अगर आपकी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की आप फर्दर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि मैथमेटिकली अगर आपको एक्सप्लेन करना है बॉइलिंग के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल बी पॉजिटिव, change in specific volume will be positive because vapors have more specific volume than the liquids. तो राइट हैंड साइड पे सब कुछ पॉजिटिव है, तो dp by dt will be positive. सॉरी, तो दैट मीन्स अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो p विल ऑल्सो राइज, और अगर p राइज हो रहा है तो टेम्परेचर विल ऑल्सो राइज. So that's how you can understand this. ठीक है, और यहीं पे अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो उसे भी आप सेम इक्वेशन क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से रिलेट कर सकते हो, बस उस केस में डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट here it will be latent heat of fusion. This will be the latent heat of fusion. तो टेल मी फ्रीजिंग पॉइंट का इफेक्ट कैसे होगा प्रेशर के साथ वाटर के लिए। तो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हो गाइस इजीली, जब हम फ्रीजिंग की बात करते हैं, फ्रीजिंग मीन्स सॉलिड टू सॉरी liquid to solids. So what happens usually as a system, as the phase change from liquid to solids, their density increases. Their density increases. That means the specific volume decreases. For usually the solids has more density than their liquid form. So that's why the specific volume will decrease. So here you can see when you will talk about the change in phase from liquid to solids, delta V will be a negative value. Delta V is a negative value, latent heat of fusion. Latent heat of fusion is for solid to liquid. Latent heat of fusion means melting. बट जब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रीजिंग के लिए तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, बिकॉज यू नो दैट latent heat of fusion can be written as minus of latent heat of freezing. So minus and this minus will become positive. So ultimately you can see as pressure increases, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
as pressure increases, the temperature will also increase. Means usually for the substance, as pressure increases, their freezing point will also increase. ठीक है? But this thing is not valid for water. Water के लिए exception है. Water is exception. You know that you have studied it already in pure substance. Because for water, as we move from liquid to solid, the density decreases. Density decreases, that means the specific volume will increase. So here you can see if we increase the pressure, so the freezing point temperature of water will decrease. ठीक है, तो वाटर के केस में उल्टा होता है. दैट्स वाई वाटर के लिए हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है. ओके, दैट्स वाई अगर आपको पता होगा अबाउट आइस स्केटिंग, what happens in ice skating, we have a floor of ice. ओके, पूरा एक हमारा ग्राउंड होता है आइस में कवर. वी डू स्केटिंग, तो ड्यू टू द स्केटिंग आइस के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है. व्हेन दोज स्केट्स पुट द प्रेशर ऑन आइस, तो व्हाट हैपेंस, they actually decreases the freezing point of water, freezing point of that ice, and because of that a very thin layer of water will form, which makes the skating more smooth. ठीक है, मतलब वहां पे जो फ्रिक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है. अदरवाइज आप समझ सकते हो स्केटिंग की वजह से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हीट और हीट से मेल्ट हो जाना चाहिए ग्राउंड, बट ऐसा नहीं होता. द रीजन इज ड्यू टू स्केटिंग, वॉट एवर प्रेशर दे आर exerting, the force the skates are exerting, they will decrease the freezing point. Because of that, some small amount of water will form that will reduce the pressure. होता है ना, मार्बल के फ्लोर्स होते हैं या कहीं पे भी अगर पानी पड़ा हो तो आप थोड़ा फिसलने लग जाते हो, स्लिपरी हो जाता है. दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस. ओके, so this is something about the freezing point and the boiling point part from thermodynamics. इसी में एक और क्वेश्चन है, वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो सोचना. about the boiling point elevation and freezing point depression with the help of salt. जब हम आइसक्रीम बनाते हैं और या फिर जैसे आपको पता है इन सम कंट्रीज वी हैव वेरी, दे फील they face a very heavy snowfall. When such a large chunk of snow is there on the ground, on the roads, at the roof of the houses, so how they remove all that snow? Why they put salt there? ठीक है, when we prepare the ice cream, why we put some salt there? So you can check and you can see. ठीक है, think about that. उसका भी रीजन ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें भी रिलेट कर सकते हैं. ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है, और भी डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आप खुद से देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the thermodynamic principles behind the operation of combustion engine, internal combustion engine, for example car, bike. So this is very common interview question. Maybe all of you already know the answer of this, but still I would suggest take couple of minutes and see and tell me what do you think, what shall be the answer. Think.
I hope you know the answer. The engines, or basically the heat engines, we can explain with the help of Carnot cycle if we talk about the ideal engines. Or otherwise, in real life, if you want to talk, you can talk about the Otto cycles and the diesel cycle. ठीक है? I hope you know that basic difference. अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है बीटेक में तो आपको एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए. If you have time, तो you can read about them. ठीक है? At least a basic idea. Basic idea means what cycles are there, what are those four steps involved. Like in Carnot cycle, you know there are four steps. First is isothermal heat addition, then adiabatic compression or expansion. बोलो. Third, isothermal heat rejection, and fourth, adiabatic compression. This is the Carnot cycle: isothermal heat addition, adiabatic expansion, isothermal heat rejection, and adiabatic compression. You should know about the PV diagram of Carnot cycle. Something like this: 1, 2, 3, 4, where you know that first step 1 to 2 is isothermal heat addition, then adiabatic expansion, then 3 to 4 isothermal heat rejection, where heat is reject, and 4 to 1 is iso fourth is ही adiabatic compression. ठीक है, तो ये कार्नोट साइकिल हो गई. अब इसमें एफिशिएंसी क्या होती है कार्नोट साइकिल के केस में? यू नो दैट 1 minus QL upon QH, which you can write as 1 minus TL upon TH. Hmm. Similarly, you should know something about the Otto cycle and diesel cycle. At least the basics you should have in your mind. And if you know the Carnot cycle, then these things are not a big deal for you. These are very easy. ऑटो साइकिल्स में आपको पता है क्या होता है? वहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है वो भी यही होती है, बट वहाँ क्यूएल की जगह हम लेते हैं T4 - T1, क्यूएच की जगह T2 - T3, सॉरी T3 - T2. सेम इन और जो ऑटो साइकिल्स होती हैं दे आर यूज्ड इन बेसिकली द गैसोलीन इंजन्स which are ignition spark engines. Diesel cycles are compression spark engines, like diesel engines itself. Diesel is the fuel. So you should know the difference. कि what are those four steps, what are not. तो ये आप सबको आता है तो इसमें ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं कर रहे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. बट इन केस एनी वन ऑफ यू वांट मी टू डिस्कस दिस इन डिटेल, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में मेंशन कर सकते हो. वी कैन हैव सम स्पेशल क्लास सेशंस फॉर दिस, जहाँ पे मैं आपको इस सभी साइकिल्स के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. ठीक है, ओनली दैट मच विच विल बी रिक्वायर्ड. तो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है, जो देखो मैं आपसे बात कर ही रहा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट इन द डिक्रीजिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस. व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ आइसक्रीम. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इसके बारे में आप ट्राई कर लेना, चेक कर लेना. तो आगे बढ़ते हैं.
लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे और भी है। हाँ, 6 क्वेश्चन। Why do some plastic bottles shrink when hot liquids are poured into them? Discuss the thermal properties and behavior of polymer. ठीक है, देखो गाइस, अगर आपको पता हो प्लास्टिक बॉटल्स या जो, आप घर में भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बिस्लेरी की या कोई सी भी पानी की एक बोतल ले लेना, उसमें आप गर्म पानी रखना, just put fill that by some hot water, not completely but up to some height. ठीक है, hot water. Now wait for some time, and when you will wait, so you will see the bottle will shrink, something like this. Water will be there, but the bottle will shrink. ठीक है, you can check that when this bottle will become cold or normal. So bottle will shrink. So the point is why? Why this shrinking of bottle is taking place? ठीक है, what is the thermodynamic consideration in this? Plus, one more point here is what are the thermal properties and behavior of polymers? ठीक है, तो think about this, try to visualize this scene in your mind. ठीक है, ये हम तो प्लास्टिक बॉटल्स की बात कर रहे हैं, आपके स्टीम के कंटेनर्स श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंटेनर स्टील बॉटल, पुट हॉट वाटर इन दैट or a hot steam in that, and then close it, and then from outside just spray cold water. You will see that is steam bottle, steel bottle, metal bottle will get shrink. अगर आप उसे कंप्लीट स्टीम से फिल कर दो तब। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है। So think about this, take couple of minutes. Yes guys, पॉलीमर टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसलिए पॉलीमर का स्ट्रक्चर डिफॉर्म होने लगता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हम्म, बहुत सारे फैक्टर्स हैं गाइस। अगर आप एक थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो आप यहाँ ऐसे समझ सकते हो, वी हैव दिस बॉटल, filled with hot water. This is the empty space, or you can say air. So since this water is hot, so what will happen with some time? Water molecules will evaporate. Some evaporation will occur.
Okay, due to which here some vapors will get formed. This entire space will be filled by the vapors. ठीक है तो vapors will exert some force, liquid will exert some force, but after a time when this water, the temperature of the water will start to decrease. So these vapor molecules present here will start to get condensed. And the when vapors will start to get condensed, what will happen? A vacuum, a empty space will be created. A vacuum, or you can say one empty space will be created. Surrounding pressure is high, and inside the bottle pressure will become suddenly low. So due to this pressure difference, force imbalance, what will happen? The bottle will get shrink. This is one way of explaining the things from thermodynamic point of view. You know how the pressure temperature things work. We have just explained that in last to last question. Hey, okay. Apart from that, you can talk about the polymer. Like when we talk about the polymers, you know how polymers are formed by polymerization reaction. And when we have the polymers, those polymers, we have monomers, we introduce them into the reactor, polymerization reaction occurs, and we polymers get formed. And you know, when the polymers get formed, they are not like this, like in the shape of bottle or in the shape of AC covers or something. So, with the help of processes like molding or blowing, etc., we convert those polymer sheets into the desired shapes and sizes. So when you apply those processes of molding, blowing, etc., so the shape of the polymers changes. Because of that shape change, the molecular orientation may get affected. The residual stresses may get developed. ठीक है मतलब internal stress may get developed. So due to the heating or something like this, वो stress release हो सकते हैं that can cause the shrink of the bottle. Otherwise, softening and deformation you can use to define this. Otherwise, you can also talk about the glass transition temperature if you know that difference of thermosetting and thermoplastic polymers. So you can use the concept of glass transition temperature. ठीक है apart from that you can talk about the MOCs, material of constructions, their thermal characteristics. Like some polymers are thermally degradable, some are not. Some can bear high temperature, some cannot. Like this you can explain the things. ठीक है and you can also talk about their designing, thickness, thermal expansion parameters. Thermodynamic parameters की हम बात कर रहे हैं, आप thermal expansion coefficient of thermal expansions की यूज कर सकते हो. ठीक है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस तरह से आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो इस तरह से आपका ये जो डिस्कशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, आप दे सकते हो. ठीक है गाइस. तो ये आज के लिए था हमारा. बाकी एक क्वेश्चन और है, वो आप लोग खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है एंड आई बिलीव यू सम ऑफ यू ऑलरेडी नो द आंसर. हाउ डू रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स वर्क बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स? एक्सप्लेन द थर्म रेफ्रिजरेशन साइकिल. ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करना. आई होप यू ऑलरेडी नो दिस. ठीक है बट स्टिल आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई वंस एंड उसके बाद हम इसे देखेंगे, डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो जस्ट रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है तो बाकी आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है. आप में से जो लोग भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी रैंक आई है, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपके जूनियर्स आपसे डिस्कस कर रहे होंगे कि सर हमें भी करना, बताओ अगले साल हम भी आपके साथ आप उसी कंपनी में उस पीएसयू में आएंगे, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें. तो आप उन्हें गेट एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करने के लिए वो पूछते हैं तो आप उन्हें सजेशन कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो. राइट नाउ देयर इज एन ऑफर गोइंग ऑन ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, वैलिड टिल 31 मई, जिसमें अगर वो हमारा कोड यूज करते हैं, एजुकेटर कोड, लाइक फॉर मी इट इज ACE009.
एंड फॉर अंकुर सर इट इज अंकुर 073। ठीक है, तो अगर वो हमारा कोड यूज करके यहाँ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस समय ऑफर चल रहा है। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में उन्हें ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में अप टू 6 मंथ्स का एक्सटेंशन उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, प्लस फीस 50% ऑफ उन्हें मिल सकता है अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पे। लाइक 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है, सॉरी 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 12,999 के प्राइस पर है, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 14,999 के प्राइस पर है, और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 24,999 के प्राइस पे चल रहा है। ठीक है, my code is ACE009। I have told you that I will discuss the subjects like thermodynamics, fluid mechanics, CRE, aptitude, and process calculation. Apart from that, I will also help you to understand the concepts of process designing, basically the process equipment design, which can help you during your BTech projects, during your interviews related to EIL and other organizations where you are planning to join as a process engineer or a process design engineer, and in many other sectors like L&Ts and all। ठीक है, तो ये तो हमारे ऑफर्स के बारे में था गाइस। 12 मंथ्स का 14,999 में है, 24 मंथ्स का 24,999 में है, और आपका 9 मंथ्स का ओनली 12,999 में है। तो मतलब 1,000 पर मंथ का भी एवरेज नहीं है, उससे भी कम ही है अगर आप ठीक से चेक करो। और यहाँ पे बेनिफिट क्या है, आप मल्टीपल बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, मल्टीपल एजुकेटर्स की वीडियो मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स मल्टीपल टाइम देख सकते हो, आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेंगी, जो प्लस कोर्स है हमारे उनका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, एंड 30th मई से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, विजन बैच। इन बैच बी, देयर वी विल स्टार्ट, वी आर स्टार्टिंग प्रोसेस कैलकुलेशन फ्रॉम 8 AM इन मॉर्निंग। ठीक है, 30 मई ऑनवर्ड्स, and that will be in complete English. So any one of you who has difficulty in Hindi, understanding Hindi, and wants to do the classes in English mode, so you can join this batch. This is the only one and only batch on an Academy platform where all the subjects will be discussed in English mode. Okay, and you know about the results, why you want to appear the gate, why you should take the subscription, so that अगले साल हम गेट 25 के नाम पे आपका फोटो यहाँ लगा पाए। लास्ट ईयर भी जिन लोगों ने लिया था उनमें आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 स्ट्रीम्स में हमारा AIR 1 थे, इंक्लूडिंग केमिकल। इसके अलावा केमिकल की स्पेसिफिकली बात करें तो 40+ स्टूडेंट्स हमारे टॉप 100 में आए थे, एंड दे वर द प्लस स्टूडेंट्स। ठीक है, और बाकी दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, गेट विद एस, यू कैन ज्वाइन देयर। आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी है, सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप यहाँ पे ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप वैसे भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको सभी इंफॉर्मेशन, हैंडआउट्स और इंपॉर्टेंट DPPs एंड WPPs मिलेंगे रिगार्डिंग द वेरियस सब्जेक्ट्स, स्पेशली माई सब्जेक्ट्स thermodynamics, FM, PC, CRE, FT, which will help you to prepare your GATE exam smoothly and practice the code numericals. So this is something about the day, guys, something about the Academy offers, the questions, something about me I have told you. Now, see you in the next session. There we will have our fifth episode and the sixth session overall. So see you. Take care. Bye bye. Have a great day ahead.